Good morning, students. This video is for class 11th. The subject is accounts. In this video, we'll discuss the types of accounts and the accounting rules for these types of accounts. So, subject is accounts, and this is for class 11. Types of accounts. Basically, there are three types of accounts. Personal accounts, real accounts, and the third one is nominal accounts. तीन प्रकार के अकाउंट्स हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. Now we'll try to understand the meaning of these three types of accounts. So, पहला वाला जो है personal accounts. This includes again three types of personal accounts. Personal account भी तीन प्रकार का है. तीन प्रकार के accounts इसमें आते हैं. पहला है human beings, accounts of human beings, यानी कि असली इंसान के accounts. जैसे कि हो गया सुनीता's account, okay, Sham's account. Example, you study in school, so your account, the account of every student is maintained in the accounts office of the school. That's why you get the notice by the teacher to your class, by your class teacher to your parent ki the fees of this particular student is outstanding. अकाउंट्स ऑफिस ट्रैक रखता है हर बच्चे की फीस का. हर बच्चे के नाम का अकाउंट खुला होता है अकाउंट्स ऑफिस में. ओके, उससे पता लगता है इसके पेरेंट ने हर महीने की फीस दे दी है कि नहीं दी. जिसकी फीस नहीं आई होती तो वो क्लास टीचर को इन्फॉर्म करते हो. क्लास टीचर इन्फॉर्म करता है पेरेंट को. तो आप बच्चे हैं, आपका अकाउंट जो स्कूल के साथ है वो ऑब्वियसली यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग अकाउंट. ओके, पर्सनल अकाउंट. Second is artificial personal accounts. Artificial personal accounts क्या हो गए? Artificial personal accounts basically man made हो गए ना. Artificial means जो भी चीज इंसान ने बनाई. जैसे कि इसमें आ गया ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आ गया, फर्म्स आ गई, फर्म का अकाउंट, क्लब्स, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की फीस जमा करता है बैंक में, तो बैंक में वो प्रिंसिपल के नाम में वो फीस नहीं डालता, वो स्कूल के नाम में वो फीस डिपॉजिट करता है. ठीक है, तो स्कूल के नाम का अकाउंट बैंक के साथ है. फॉर एग्जांपल, सपोज एक स्कूल है सेंट जोसेफ एकेडमी. तो सेंट जोसेफ एकेडमी का अकाउंट अगर यूनियन बैंक के साथ है, तो अगर पेरेंट जमा कर रहा है फीस सेंट जोसेफ एकेडमी अकाउंट में, तो सेंट जोसेफ एकेडमी इज द नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. This would come under artificial personal account. I hope this is clear. Third type of personal accounts are, children, representative personal accounts. This we'll discuss in detail later on. ठीक है, अभी शुरू में आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, इसको डिस्कस करेंगे बाद में. फिलहाल पर्सनल अकाउंट में इतना काफी है. ह्यूमन बीइंग्स और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आते हैं इसमें. ठीक है, देन जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन. तो अभी हमने पर्सनल अकाउंट समझा. पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार का है: इंसान के अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गया ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कोई संस्था हो गई, क्लब हो गया, ओके, कॉलेज का नाम हो सकता है. रेगुलर पर्सनल अकाउंट मैंने कहा बाद में बताएंगे.
we'll discuss it later. शुरू में कॉम्प्लिकेट नहीं करते. Number 2 is real accounts. So अब रियल अकाउंट में क्या आएगा? All the assets. Real accounts are associated with the accounts of all the assets. Assets क्या होते हैं? All the valuable things owned by a business. All the valuable things owned by any organization are termed as assets, or anything that will give benefit to the business in future. Anything which will enable the business to earn income in future is asset. तो सारी कीमती चीज़ें जो पैसे से एक बिजनेस खरीदता है वो असेट्स हैं. ठीक है. तो जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये सब असेट्स में आता है. देन थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट्स. Nominal accounts. Nominal accounts include accounts of all just a moment, let me erase this. Expenses यानी कि खर्चे, losses, okay, and what else? Incomes and gains. Okay, so expenses खर्चा हो गया, loss घाटा हो गया, इनकम हो गया जो मनी हम रिसीव करते हैं बाय सेलिंग गुड्स, गेन हो गया फायदा, लाभ. ओके, नाउ लेट्स go through the rules. Let's study about the rules, accounting rules. अकाउंटिंग के वो नियम जो इन 3 प्रकार के अकाउंट्स पे लागू होते हैं, जो the accounting rules which are applicable to these 3 types of accounts. Okay, so I'm mentioning here accounting rules. Basically, accounting rules means debit and credit rules. Children, बेटा डेबिट को शॉर्ट में हम DR ऐसे लिखेंगे, और क्रेडिट को शॉर्ट में हम लिखते हैं CR. These are the short forms. Now let's say, what's the accounting rule applicable to personal account? For personal accounts, remember, you have to learn this rule. Debit the receiver and credit the giver. Okay, ये नियम है कुछ, इसको जब याद कर लेंगे, इसके मायने तब निकल कर आएंगे सामने जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. Personal account. Then we have real account. Second one was real accounts related to assets. इसका क्या रूल है? Debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. Third one is, children, nominal account. Nominal accounts. The rule applicable is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. ये कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे.
इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लर्न कर लेना. Let's proceed further. Apart from these three golden rules, we call them golden rules, there are some additional rules, children, which I'll elaborate now. उनके बारे में अभी मैं समझा रहा हूँ आपको. अब ऐसा है कि अकाउंट टी फॉर्मेट में बनता है बेटा. अकाउंट एक हेडिंग होगी ना, तो अकाउंट कैसे बनता है? ये अकाउंट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर A/C इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर अकाउंट. तो बाद में आप समझेंगे लेजर जब करेंगे. लेजर अकाउंट इस प्रकार से बनता है, टी फॉर्म. तो इसका ये साइड तो होता है DR and this side is CR, debit credit. Okay, now to understand these additional accounting rules, ये टी फॉर्म में अकाउंट बनाना जरूरी था. तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा एडिशनल अकाउंटिंग रूल्स. ओके, एडिशनल अकाउंटिंग रूल्स में पहला अकाउंटिंग रूल जो है वो असेट के रिलेटेड है. असेट अकाउंट मैंने ये बनाया टी फॉर्मेट में, डेबिट साइड and the credit side. And now listen, focus here. Plus sign I'm putting on the debit and minus sign I'm putting on the credit. So how we are going to learn it? इसको ऐसे learn करना है बेटा. To increase asset account, debit it to decrease asset account, credit it. Okay, this was in the additional rules, this is the first one. Second rule is pertaining to liability account. Liability account, I'm making it. Okay, तो ये रहा आपका liability account बेटा. DR for debit and CR for credit. Here plus sign I'm putting on the credit side and minus sign negative sign I'm putting on the debit. Learn कैसे करेंगे इसको? To increase liability account, credit it to decrease liability account, debit it. Just wait, let me scroll down. तो ये असेट और लायबिलिटी अकाउंट का रूल था. आगे चलते हैं. थर्ड रूल is for capital account, children. Here's your capital account. Plus positive sign I'm putting on the credit and negative sign I'm putting on the debit. By now you must have got an idea as to how to learn, how to frame the rule. पहले इंक्रीज की बात करते हैं हम लोग. टू इंक्रीज capital account, credit it to decrease capital account, debit it. Okay, to increase capital account, credit it. To decrease capital account, debit it. ये याद करना है आपको. Excuse me. Fourth rule is regarding
expense account, and it is also applicable to loss account, children. And here's your expense or loss account. I made it. Here, positive sign I'm putting on the debit and negative sign I'm putting on the credit. So how do we learn it? First, as you know, increase की बात कर रहे हैं हम लोग. So to increase expense, or it could be loss account, although expense and loss are two different terms, which I'll elaborate later on. To increase expense or loss account, debit it to decrease expense or loss account, credit it. Expense को खर्चा बोलते हैं, पैसा जेब से बाहर जा रहा है, cash is flowing out, but it's giving benefit in return. Your parents are spending money on your education. The school fees which they are giving, it's an expense for your parent, but in return they're getting the benefit that you are getting educated. Okay, in case of loss, what happens? Cash flows out of the pocket, but it doesn't give any benefit in return. One gets frustrated because of loss. So I hope it's clear. Now, let's come to the last of these rules, which is pertaining to your revenue, okay, account, and it's also pertaining to gain account. Revenue and gain are not the same. Revenue means money which you receive by selling goods or services, total money received by selling goods or services. On the other hand, gain is the kind of profit which you have made on it. Okay, so here plus sign will come, positive sign is on the credit, and minus sign will come on the debit. So how do we learn? To increase revenue or gain account, credit it to decrease revenue or gain account, debit it. Those who are totally new to accounts must be wondering what's happening, but as we proceed, as we solve the questions, all these rules will be applicable. And right now you learn these rules for today. So this was the first session. You can take a screenshot of these 3 golden rules, and then of these 2 rules, and then these 2 rules, and this one. I conclude this session here only. In my next session, I'll be solving questions on journal. We'll discuss journal entries. Thank you.